Okay, chalo. Nuclei. Nuclei means already we are talking about nucleus के बारे में only we are talking, not electrons वगैरह नहीं कर रहे हैं. Okay, nucleus के बारे में. In nucleus में क्या क्या करना पड़ा है? जब already this all thing chemistry में आया. The positive charge and entire mass of the atom is constant center called nucleus. First देखो, total mass is assumed to be constant at the nucleus only, because protons and neutrons are the mass. Electrons are very less mass. Okay, that's why we are not considering electrons. देखो, एटम इज 10 पावर माइनस 10, न्यूक्लियस इज 10 पावर माइनस 15. इतना छोटा है न्यूक्लियस, उसके बारे में भी स्टडिंग. ओके, व्हाट आर थिंग्स वी आर स्टडिंग? न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज लाइक साइज, मास, डेंसिटी, स्टेबिलिटी पढ़ने वाला है. आई आल्सो न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन आल्सो वी आर स्टडिंग. इफ यू डन दिस वन, टॉप डन. Done? Okay. Now we'll study about structure के बारे में लर्न करेंगे. न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में क्या क्या है, व्हाट आर द पार्टिकल्स आर देयर इनसाइड न्यूक्लियस में, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, देखो, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. अभी से नाम है, न्यूक्लियॉन्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को वी कॉल एज न्यूक्लियॉन्स. ओके, एंड इसमें प्रोटॉन के बारे में टेल मी, सब एटॉमिक पार्टिकल है एंड उसका चार्ज इज प्लस सी. E is the charge of electron, plus C is nothing but plus 1.6 in 10 power minus 7 charge है. Okay, and mass 1.6726 in 10 power minus 27 kg, and we consider that as 1 AMU. 1 AMU. Why we are writing larger number? Because mass, when we consider neutron and proton, which one is more or same? Proton and neutron. So neutron is more, little more. That's why to consider we put this one. And symbol है, it is H11. नीचे वाला क्या है? चार्ज. ये पार्टिकल है ना, पार्टिकल का चार्ज है. चार्ज इज प्लस 1, राइट? प्लस 1 ही. एंड ये वाला मास है. मास इज 1 AMU, राइट? देखो, दिस इज सिंबल. मतलब अभी से प्रोटॉन को मिल पड़ेगा ना, H1 प्रोटॉन का सिंबल. बिकॉज हाइड्रोजन में आल्सो number of protons are nothing but 1 only, right? So proton को we consider symbol change करते हैं. Proton का symbol is 1. Done? Okay. Next. First we go. Subatomic. These are chemistry only. Next. Neutron. Neutron also subatomic particles. The charge is 0. देखो, mass is 1.6749. Yeah, 26. एक ज्यादा है. Neutron is, but we consider that as also 1 AMU. And neutron का symbol है N. देखो, this is charge. And this is mass. And X-ray also, which I send, that also take printout. X-ray maybe atoms में questions are there उसमें. Okay. तो न्यूक्लियस का अंदर में we studied protons and neutrons. Now some terminologies we have to know, like atomic number, mass number वगैरह terminologies. Majorly in this chapter, numericals are binding energy and mass defect का questions only will come exam.
Okay. Sure. Now, basic terminologies we are learning in atomic structure में. First one is atomic number. Atomic number, you know, there is nothing but number of protons in the nucleus. It's called atomic number. And number of protons is always equal to number of electrons in neutral atom. Number of protons is also equal to number of electrons. And next one is mass number. Mass number का symbol है A. Atomic number का symbol is Z. Okay. Mass number is nothing but it is also called as nucleon number. See, mass is different. This is different. The nucleon number है. A is called mass number. It is the total number of neutrons and protons in the nucleus. Mass number and atomic mass is different. मास नंबर है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों मिलके मास नंबर बोलते हैं. ओके. और न्यूक्लियन नंबर बोलते हैं. रिप्रेजेंट एज ए. सो ए इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. Then number of neutrons plus number of protons is called mass number. Okay. So next, atomic mass. Atomic mass is mass of one atom of the element. एक atom का element mass को we call as atomic mass. Tell me, atomic mass means how to find? Tell me how to find atomic mass. Mass of atom के अंदर में protons कितना है, neutrons कितना है, दोनों का mass ऐड किया तो ये आएगा ना. So mass of protons plus mass of neutrons. Right? Mass of proton means one mass of the proton is mp and number of protons are np. So total mass is how much? Np into mp plus mass of neutron will be n into mn. Right? I already told mass of neutron and mass of proton is nothing but AMU, one AMU, right? One AMU. So दोनों का same है mass है ना, we can say. So therefore NP plus NN times one AMU. Okay. And this NP plus NN is nothing but mass number times AMU. खत्म. जो mass number जो आया बाद में AMU ऐड करो, that is nothing but atomic mass. Okay. Yeah. Now इसका representation देखो. Suppose X element is there, Z A. Atomic number, mass number. Okay, tell me. Suppose मान लो oxygen 816. Number of protons I want, number of neutrons and number of electrons also. Or atomic number is how much? This one 8. Mass number is how much? 16. Atomic mass is how much? 16 AMU. Okay. Mass number इसका क्या बोलते हो? AMU बोलने का. उसके बाद. Okay. So mass is equal to 16 AMU. Add करें mass number. Okay. Suppose tell me carbon 612. So हम बोलो atomic number is how much? Atomic number is 6. Mass number 12. Atomic mass कितना? Atomic mass क्या है? Mass number बाद में AMU डालने का है. So atomic mass will be इसका 12 AMU. बाद में AMU ऐड करने का है. Atomic mass will be. Okay. These are the things. Next, we will classify
Classification of nuclei. What are the classification of nuclei? Isotopes, isobars, isotones. Okay. So tell me, what are isotopes means? Atoms of the element whose nuclei have same number of protons but different number of neutrons. एक simple way में same atomic number but different mass number is called as isotopes. Same atomic number, different mass number. They'll give some examples. They will tell whether they are isotopes or not isotopes. They will tell. Okay, you have to identify something small questions. Okay, so example they tell me chlorine 1735 and chlorine 1737. Tell me, their isotopes are same atomic number but different mass number. That's all isotopes. India, same atomic number but different mass number. Average atomic mass. Suppose I want to calculate average atomic mass. So what you will do, tell me, suppose chlorine ka, they given some percentage ka. Okay. How to calculate, you know already, right? How to calculate, tell me. Suppose chlorine ka 1735. Suppose chlorine is there 1735 and chlorine is there 1737 is there. They given the percentage. These are isotopes, right? They given the percentage. They given this is available at 75% and this is available at 25%. I want to find average atomic mass. Average atomic mass. They can give any element isotopes. They'll give percentage. They will tell to calculate average atomic mass. Okay. आपको क्या करना है क्या? Tell me. This 75 by 100 into इसका mass कितना है? 35 plus 25 by 100 into 37. Calculate and tell answer. 35.5. 35.5. Okay. There's only one decimal में रहेगा ना? 35.5 U. These are isotopes. Okay. जब भी average atomic mass calculate करो बोलते हो percentage into the mass. Percentage into the mass. Okay. Now, isobars क्या है? Ulta of the isotopes. Okay. So same mass number but different atomic number. Okay. If the atomic numbers are different, elements are different, right? So that's why examples will be different elements. Carbon, nitrogen. Carbon ka 6, 14 and nitrogen 7, 14. Because same mass number but different atomic number. These are called as isobars. Next one is isotones. Isotones means same number of neutrons. Same number of neutrons. Okay. Isotones. Atoms of different elements whose nuclei have same number of neutrons. Same number of neutrons are called as isotones. Suppose lithium 37 and beryllium 48. इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा? मास नंबर माइनस ईयर नंबर. ओके. कितना 7 minus 3. इसका 8 minus 4 also 4. So number of neutrons are same. That's why these are isotones. Hostel also I'll send the PDF का एक ही जगह में भेजूंगा. You can take a printout. तो printout लेके next class में दिखाने का फर्स्ट सेकंड. Next. Now nuclear shape, size and density. We are talking about shape कितना है, क्या है. Okay. Okay. देखो shape क्या है? Shape of the nucleus is assumed to be spherical. 90% spherical है. And spherical का formula क्या है? It is R. Spherical A volume कितना है?
4/3 pi r cube. साइज नो शेप क्या है बोलते ऑलवेज स्फेरिकल मानते हैं न्यूक्लियस के अंदर एंड इसका वॉल्यूम भी शुड बी 4/3 pi r cube. शेप दम जब न्यूक्लियस के बारे में ओनली वी स्टडी न्यूक्लियस छोटा सा न्यूक्लियस के बारे में. Next we'll go for size also. Then next size का how to find size. देखो volume of nucleus, देखो volume of इधर से फॉर्मूला आएगा. Volume of nucleus is proportional to number of nucleons inside it. Number of nucleons inside it. More the number of nucleons, more the volume of the nucleus, right? Nucleon number ज़्यादा 10, 20, 30 protons are there means volume also will increase. So and we know that means V is proportional to nucleons nothing but A, right? Number of nucleons is A. Okay, volume is how much? 4/3 pi r cube is proportional to A. So r cube is proportional. A पूरा constant है. And whenever proportionality वो भी constant है. That means I can write like this: r cube is proportional to A. R is equal to proportionality remove किया तो one constant आएगा ना? R naught A whole power 1/3 A power. This is the formula. Size means radius. The radius you have to find r naught A power 1/3. Where r naught, this is the radius of nucleus. Radius of nucleus. And r naught is a fixed value, that is 1.2 Fermi to approximately 1.5 Fermi. Whenever not given, take 1.2 Fermi. Fermi means 10 power minus 15. 1 Fermi is equal to 10 power minus 15 meters. Okay. And this is a formula. मतलब आपको दो formula रन करना पड़ेगा. Volume is proportional to nucleon number and R is equal to R naught A power 1/3. A is the mass number. Okay, this is formula. R naught का value is 1.2. अगर वो जो दिया वो डालो उसको क्वेश्चन में दिया तो. Okay, okay. करो कितना है? फर्स्ट फॉर्मूला विलन. I want the radius of copper 64 nucleus in Fermi. R naught value here given. That value is 5.6 into 10 power minus 15. 1. 5.6 into 10 power minus. 5.6 into I have subject. Yes, answer is because radius is R is equal to R naught A power 1/3. R is equal to R naught is 1.4 Fermi China 10 minus 3 Fermi only into 64 whole power 1/3. So 4 cube I can write 4 cancel. So R is equal to 5.6 Fermi. This is the radius of the nucleus. Okay. Suppose मान लो एक example लेंगे. Suppose X element is there. उसका mass number is 25 and Y element is there. उसका mass number is 125. Okay, 100. He's asking what is the volume of X by volume of Y. One by 5. Yes, 1/5. Because volume is proportional to mass number, right? So that means V1 by V2 is equal to A1 by A2, 25 by 125, 1/5. Two formulas to remember. Volume is proportional to mass number and R equal to R naught A power 1/3. Okay, now density. उसका density क्या रहता है? Density का formula क्या है? Nucleus का density का क्या रहता है? Density is equal to mass by volume, basic formula. Okay, mass is nothing but I told you
A into AMU by volume. Volume is 4 by 3 pi r cube. And here I am substituting AMU by 4 by 3 pi r cube देखेंगे. R is equal to R naught A over 1 by 3. I'm cubing on both sides. R cube will be R naught cube into A, right? So R cube के जगह में R naught cube into A. A cancel. And 1 AMU, right? 1 AMU, you know how to convert into kgs? 1.67 into 10 power of minus 24 kgs by 4 by 3 pi or 1.2 per meter. 1.2 into 10 power of minus 15 whole cube. If you solve, you get approximately as 2.3 into 10 to the power of 17 kg per meter cube. देखो 10 power of 17 इतना हाई डेंसिटी है न्यूक्लियस का. इट इज लाइक आयरन का डेंसिटी कितना उतना रहेगा, इतना हार्ड रहेगा न्यूक्लियस का डेंसिटी. ओके, एंड वेदर डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द मास नंबर. whether density depends on mass number. Here A is getting cancelled. Very important. They will ask इसका इतना है तो उसका इतना बोल तो सेम रहेगा. सभी एटम्स का न्यूक्लियस का हार्डनेस दैट डेंसिटी इफ यू सी विल गेट दिस मच ऑफ द approximate. Okay, so it does not depend on mass number. Nuclear density is independent of mass number. It is same for nuclei of all atoms, and nuclear density is 10 power of 14 times more than the water. Water का density मतलब 10 cube kg per meter cube, nearly 14 times ज़्यादा है because 10 power of 17 तक आ रहा है ना, rather than water. So this is a nuclear structure के बारे में we learn. Actually, before they used to have a big chapter this one. Why? Because radioactivity will care. They removed it as a very good thing. Otherwise, radioactivity is so big. Right? Okay, so we're not doing questions. Radioactivity questions कुछ आएगा निकाल लो. Almost 60% chapter done. Okay. Sure. No. Mass energy equivalence, mass defect and binding energy, nuclear stability and binding energy per nucleus. We learn. Who is this person? You know, the friend. No. Okay. Okay. He is a person who talked about. See, कभी भी Einstein बोल तो कौन सा इक्वेशन आएगा? कौन सा माइंड में क्या आएगा? Which equation you will get in mind? E equals mc square. पड़ेगा, बट क्या है वो कब यूज करेगा, क्या है कहा तुम बोलो. इक्वल mc स्क्वायर क्या है, कब यूज करेगा? नहीं, ओनली कभी भी छोटे बच्चे को पूछे तो इक्वल mc स्क्वायर, बट उसका क्या है इधर आएगा, थोड़ा इधर आएगा. छोटा सा नर्सरी से पढ़ रहा ना इक्वल mc स्क्वायर, अभी इधर आएगा 12th क्लास. ओके, देखो फर्स्ट उसका मास एनर्जी का क्या है रिलेशन. देखो मास एंड एनर्जी इक्विवेलेंस है बोल के बोला था. देखो in 1905 Einstein in his special theory of relativity suggested that mass is a form of energy. Mass and energy, some relationship is there. Mass is a form of energy बोल के बोल रहा था. He predicted mass and energies are equivalent. And suppose मान लो, and he has given the formula m is equal to mass क्या है, energy upon c square or equal to mc square, right? इधर से आया ना, E equal to mc square. From this mass how to calculate energy upon c square. Okay, this mass and energy का relationship है we are talking about.
सो व्हेनेवर एक ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होगा, एनर्जी से आपको सी स्क्वायर से डिवाइड किया तो मास आ जाएगा। तो उसका कहानी क्या है, कैसा है, यू नो इस मतलब डाई, आई टोल्ड दैट ऑलरेडी, इसका डाई करने के बाद इसका ब्रेन का क्या किया बोल के, यू नो सॉरी सॉरी, डोंट नो। आइंस्टीन का जनरली मरने के बाद, एक्चुअली देयर इज ए मेडिकल टर्म्स में वी शुड नॉट टच विदाउट एनी परमिशन का बॉडी पार्ट्स का वगैरह चोरी नहीं करने का। बट लैब पर्सन डॉक्टर्स क्या किया, एक पर्सन ने थोड़ा ब्रेन को निकाल दिया इनसेट, ब्रेन को ऑपरेशन करके निकाल के वो लोग बर्न कर दिया। दे डोंट नो, नो वन नोस, दे वांट टू स्टडी क्या है उसका, बिकॉज उसका बहुत बहुत डिस्कवरीज किया ना, सो मच डिस्कवरीज किया। ओके, so they went and they done everything, they saw the sizes, first of all brain का size generally normal human brain से थोड़ा ज्यादा है, and but side वाला brain भी थोड़ा ज्यादा है, side से ज्यादा है, मतलब collecting the data is more for him. Okay, and दूसरा उसका number of neurons का देखिए तो normal person can think up to मान लो 100 और per second में कितना थिंक सकते हैं, उसका nearly 10,000 to 20,000 times आ रहा है थिंकिंग पावर। न्यूरॉन्स इज जेनेटिक, दैट मच थिंकिंग, मतलब सी सपोज मान लो इफ यू सी यू विल थिंक दिस इज अ पेन, नॉर्मली पेन है, वो देखेगा तो वो थिंक करना शुरू कर दिया तो पेन है, ये पेन की कौन सा मटेरियल है, वो मटेरियल में किधर से बना है, उसका एटम्स क्या है, उसका एटम्स में क्या चल रहा है, उसमें एनर्जी कितना है, मास कितना है, एवरीथिंग ही कैन एबल टू कैलकुलेट। मतलब उसका थिंकिंग पावर इस अलग है, अलग दुनिया में जाएगा। हमारा तक कितना तक जाएगा, ये पेन है, ये नया नया कुछ आया, विल ऑर्डर अमेज़न में, कभी वही है, उतना तक ही चल रहा है हमारा, उतना मनी है, खरीदेंगे, ये आया खरीदेंगे, खत्म। वी आर एक्टिंग लाइक ए नॉर्मल कस्टमर, दैट्स इट। वो लोग थिंकिंग से ज्यादा ज्यादा सो मच वी कैन नॉट गो दैट मच आल्सो। ओके, लाइक दैट पर्सन, दैट्स व्हाई अभी तक पढ़ रहे हैं ये 1900 सेंचुरी से एंड 1600, वो तो हमारी असल न्यूटन ने 1600 सेंचुरी से वी आर स्टडीइंग नाउ ओनली न्यूटन फर्स्ट क्लास सेकंड थर्ड। ओके, चलो तो इसका कहानी क्या है, कैसा है देखें। आई आस्क सम क्वेश्चन व्हिच इज हैविंग मोर मास, वन इज स्टेशनरी वाला और आइडेंटिकल मूविंग वाला, व्हिच इज हैविंग मोर मास, क्या है? एक बॉल है स्टेशनरी, एक बॉल है मूविंग है, मास किसका ज्यादा है, साथ एक बोलो, मास किसका ज्यादा है? एक बॉल है नीचे ऐसा है, एक बॉल मूविंग है। सिंपल एग्जांपल्स का मिला, Stationary. हाँ स्टेशन पर भाई, Sir, velocity zero. तो क्या होगा, वैसे तो मास का क्या, वी स्टडीड लोअर क्लास में, राइट, मास इज सेम एवरीवेयर, एनी टाइम में, एनीवेयर, मास देखा होगा ना, पढ़ा ना। हाँ चलो चलो, मास एक्चुअली अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, देखो शुरू शुरू कर दिया वो आइंस्टीन ने ब्रेन यूज करना, मूविंग बॉल हैज मोर मास। क्यों? देखो स्टेशनरी बॉल मास एम है, राइट, मास एम तो रहेगा, मूविंग बॉल क्या है, इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v, इसका मास है m, मास m तो रहेगा, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, मास तो रहेगा। तब वी स्टडी दैट व्हाट इज मास मींस, व्हाट यू टेल अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी बोल के 9 क्लास पढ़ता था ना, वो तो रहेगा मास। ओके, नाउ टेल मी इसका मास तो m है, ये राइट, इसके पास क्या होगा, टोटल मास क्या होगा, वन इज मास ड्यू टू स्टेशनरी, वन इज मास ड्यू टू स्टेशनरी बॉल, स्टेशनरी बॉल, and according to Einstein, it has some energy. Which energy it has? Kinetic energy. According to Einstein, उसका mass is nothing but kinetic energy upon c square. This also mass, extra mass is getting added. That's why moving mass has more energy. Okay, energy अगर particle के पास energy है तो energy by c square is the mass. Extra mass is getting added in the body. That's why mass is moving body का ज्यादा है बोल के इसलिए. Okay. Okay.
now इसका मास का एटम्स का भी लगता है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना. now atoms में how the Einstein is applying and क्या है we have to know. Okay, first of all understand which is a fundamental particle of an atom. Proton, neutron, electron, and right. Fundamental particle means उससे further not divided, right? अंतल में fundamental particle of an atom. तो 2 months 3 months में बिट सेट में लिखने वाले हैं सब लोग. हाँ, fundamental particles मालूम है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. और उसमें बोलो आउट ऑफ दिस 3 particles में which is the most fundamental particle. तीनों your wish, which cannot be further divided. Same नहीं है. See, fundamental particle is actually electron. Proton and neutrons are also further divided. उसको क्वार्क्स बोलते हैं, क्वार्क्स. ओके, उसका मतलब प्रोटॉन का डिवाइडेड इनटू क्वार्क्स, एंड वो क्वार्क्स का चार्ज रहेगा, सभी मिलके प्रोटॉन का चार्ज बन जाएगा. एंड न्यूट्रॉन्स आल्सो डिवाइडेड इनटू अप क्वार्क, डाउन क्वार्क बोल के रहेगा. बट इलेक्ट्रॉन इज स्टिल नो, अभी तक 2025 तक there is no further divided. Electron is not further divided. It is a fundamental particle of the atom. Okay, it is electron. Okay, चलो. Now Einstein के according में what is mass का we will see. देखो, amount of energy present in the body is called mass. कितना एनर्जी है बॉडी में, उसी को डिवाइड बाय c स्क्वायर क्या था, आपको मास मिल जाएगा. ओके, नाउ इसका कहानी देखेंगे. एटम्स में विल अप्लाई. And you know, if the mass disappears, energy is getting released always. Whenever mass is getting disappeared, energy is getting released. We will see. इसके कहानी क्या है न्यूक्लियर रिएक्शन में, we'll see. And ठीक है, देखिए हो गया. ओके, चलो. और देखो इसका कहानी. एक ऑब्जेक्ट इज देयर. इसका कहानी समझो. एक ऑब्जेक्ट इज देयर. ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ व्हाट? ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ व्हाट? एटम्स. एक ऑब्जेक्ट कोई भी एटम्स. एटम्स. ओके, एटम्स का देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एटम्स में कभी भी देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. Okay, now these atoms are stationary or slightly moving? Atoms moving, moving. So इसके पास किस क्या क्या atoms में क्या क्या energy है? Tell me. Which energy it has? Since it's moving, it has kinetic energy of the atoms plus, and also kinetic energy of the atoms are there. And दूसरा इसके पास whenever there is a force of attraction between them is there is a potential energy also. Whenever there is a force of attraction between them, there is a potential energy of the atoms. No energies are there. Okay. Now tell me, atoms are made up of. Tell me, atoms are made up of protons and electrons, right? So nucleus, electrons are revolving around the nucleus. Okay. Now tell me, first electrons के बारे में बात करेंगे. Electrons, which energy it has? Is rotating, right? Definitely it has kinetic energy. And we also studied there is a force of attraction between them. उसके वजह से there is a potential energy also. So इसके पास kinetic energy of the electron, potential energy of the electron, right? Now nucleus में बारे में बात करेंगे. Nucleus is made up of nucleons, मतलब protons and neutrons. Okay, protons and neutrons I'm taking. So there is a force of attraction between them. Nuclear force is acting, right?
attractive force. And this protons and neutrons also moving, right? So which energy this has? Yes, potential energy of the nucleus, nucleons, the nucleus, right? Kinetic energy of the nucleons. And these are electrons के बारे में हम talking about. Electrons. Right? Okay. Now tell me, these protons and neutrons are made up of, I told you, quarks, right? Quarks. Okay. So there will be upwards and downwards will be there. Okay. And this is made up of quarks. Quarks. Even neutrons में भी रहेगा and protons में भी रहेगा. So now this also there is a force of attraction between them and this is also moving. So इसके पास क्या क्या energies are there? Kinetic energy of the quarks and potential energy of the quarks. Right? इधर तक क्या ना? So आइंस्टीन बोल रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मास कितना है बोले तो नॉर्मल हम लोग 9th क्लास तक क्या amount of matter contained in the body. Colors done. Mass will not change from place to place. Done. We'll go for next topic ऐसा. Okay. But इधर mass का देखो कितना डिटेल में आ रहा है. So mass आइंस्टीन क्या बोल रहे हैं? Mass is nothing but देखो kinetic energy of the atoms plus potential energy of atoms plus kinetic energy of the electrons plus kinetic potential energy of the electrons plus kinetic energy of the nucleons plus potential energy of the nucleons plus kinetic energy of the quarks plus potential energy of the quarks upon c square. This is mass. Mass is nothing but amount of energy present in the body. Okay, by c square. Divide किया तो c the speed of light, right? Speed of light will get energy of the object. उसका ऐसा रहेगा कि उसका इक्वेशन उतना डिटेल ऐसे रहेगा डिटेल में एक ऑब्जेक्ट को तोड़ के एनर्जी में कन्वर्ट करना इनपुट वो बनाएगा. ओल्डनेस में न्यूक्लियर फिनोमेनन जब हो रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस आर हैपनिंग एट द टाइम व्हेन दे कंबाइनिंग और ब्रेकिंग द न्यूक्लियॉन्स वगैरह एट द टाइम सो मच ऑफ हीट एनर्जी इज कमिंग. वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कैसा एनर्जी कितना एनर्जी किधर से आ रहा है बोल के दे नॉट अंडरस्टूड. एंड सम ऑफ द मास इज गेटिंग डिसअपियर इन द न्यूक्लियर रिएक्शन. दे डोंट अंडरस्टूड भाई मास किधर जा रहा है और पूरा बंद करके पूरा किया तो भी मास निकल जा रहा है. सम मास माइन्यूट मास. सो दैट स्टडी वाज डन बाय द आइंस्टीन. ओके आइंस्टीन वो एक्सप्लेन किया क्यों मास डिसअपियर हो रहा है क्यों एनर्जी आ रहा है कैसा आ रहा है एंड मास एंड एनर्जी का क्या रिलेशन है कैसा है बोल के दिया पूरा. ओके चलो हो गया डन. ओके मास डिफेक्ट इसी को मास डिफेक्ट बोलते हैं. देखो मास डिफेक्ट द मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स इज लेस देन द सम ऑफ द मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स मेकिंग इट. देखो सपोज यू हैव न्यूक्लियॉन्स. सपोज मान लो 3 प्रोटॉन्स 3 न्यूट्रॉन्स है. ये न्यूक्लियॉन्स है इंडिविजुअल का न्यूक्लियॉन्स. ओके ये इससे आई मेड न्यूक्लियस. इससे आई मेड न्यूक्लियस न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन. सी मैं क्या करूंगा इधर में सपोज ईच वन इज सम पोटैटो मान लो एक पोटैटो. ओके आई विल मेजर इंडिविजुअल वेट्स. इंडिविजुअल वेट मेजर करूंगा. आई विल राइट एंड आई विल ऐड ऑल द वेट. ओके एंड ये पूरा मिलके एक ही बार मेजर करूंगा एंड अगेन आई विल मेजर द वेट. मेजर सेम है डिफरेंट है सेम राइट सेम रहेगा. बट इन न्यूक्लियर कमिंग टू न्यूक्लियर रिएक्शंस में व्हाट इज हैपनिंग इज ये न्यूक्लियॉन्स इंडिविजुअल मास किया न्यूक्लियस ये नजदीक लेके आने के बाद न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया. न्यूक्लियस कब बनेगा न्यूक्लियॉन्स जब नजदीक में लेके आए तो देयर इज अ न्यूक्लियर फोर्स विल बी देयर. बिकॉज ऑफ दैट इट विल पकड़ के रखेगा न्यूक्लियर फोर्स पकड़ के रखेगा. न्यूक्लियस बन गया. ओके दे ऑब्जर्व हियर न्यूक्लियॉन्स मास एंड न्यूक्लियस मास दे ऑब्जर्व. इसका मास इज ग्रेटर देन इसका मास मतलब सम ऑफ द मास इज गेटिंग डिसअपियर. ओके हियर व्हाट इज हैपनिंग इज मास ऑफ द nucleons is greater than mass of the nucleus.
ये पूरा इंडिविजुअल ऐड करके they wrote, and after converting the nucleus they wrote. They observed this is happening. Mass of the nucleons is greater than mass of the nucleus, and that means indirectly I can difference of mass if I calculate mass of nucleons minus mass of nucleus. This is nothing but mass defect. We represent delta m. This is nothing but delta m. Okay, mass defect. And he explained a mass here जा रहा है बोल के he explained also. That we'll see. So some mass getting disappear when nucleons is converted to nucleus. Can you tell me why? Why mass is getting disappear? Huh? Binding energy. नहीं इसमें इस एग्जांपल बोलो why it is getting disappear. Mass defect is converted to binding energy, okay, but इसमें mass क्यों disappear हो रहा है? देखो सपोज मान लो इसका न्यूक्लियॉन्स का एनर्जी टोटल मिलके E है, ओके, एंड इसमें व्हेन आई ब्रॉट ऑल न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, इसमें देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगेन बिटवीन देम. Whenever there is a force of attraction, there is a negative potential energy will be there. Potential energy will be there. Potential energy always negative है. So इसका मास कितना है? इसका मास कितना है? According to Einstein, E by c square. According to Einstein, this is mass is E by c square. Total energy is E. Now देखो इसका मास कितना है? Energy तो है. Total energy है ना? Kinetic energy होगा. Total energy minus when I brought नजदीक में, there is a potential energy getting added upon c square. देखो mass is getting this कम हो जा रहा है because when I brought all nucleons there is a potential energy coming to picture. According to Einstein, the mass is nothing but energy upon c square. Total energy is much upon c square. When you divide, the mass is getting disappear. That's why mass is getting disappear. Okay, and this is nothing but a mass defect, and mass defect का formula आएगा, वो formula learn करना पड़ेगा. ओके, इसमें मास डिफरेंस बोलते हैं 1 kg 2 kg नहीं होगा, आपको 0.0034556 ऐसा रहेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. आई विल मेक यू डू क्वेश्चंस का. आई गिव द न्यूक्लियस, यू हैव टू टेल उसका बाइंडिंग एनर्जी वगैरह कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, और इसका फॉर्मूला देखेंगे. देखो सम ऑफ द मास डिसअपीयर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड मास डिफेक्ट. इट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट. नेम इज मास डिफेक्ट. This Sunday complete modern physics I'm taking test. पक्का पढ़ लो modern physics. Then okay, now देखो इसका फॉर्मूला देखेंगे. सपोज मान लो एक एलिमेंट है X, उसका एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर इज A. ऐसे देख एग्जाम में they will give one element, उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर they will give. They will tell to calculate mass defect. Okay, here how many protons are there? Z protons. How many neutrons are there? A minus Z neutrons. Right, the neutrons are there. And मान लो one proton का मास है mp and one neutron का मास है mn. Okay, so mass defect का basic formula is what? What is the mass defect basic formula is? Mass of nucleons minus mass of nucleus. This is basic. Definition. Protons also is there and neutrons also is there, right? Now देखो mass of nucleons means how many protons are there. मान लो you have total mass कितना होगा? tell me. How many protons are there? Z protons are there. एक प्रोटॉन का मास है mp. So total proton का mass will be how much? Total proton का mass means, see, एक प्रोटॉन का mass है, one proton का mass है mp. How many protons are there? Z is there, right? So Z into mp plus न्यूट्रॉन का मास कितना होगा? एक न्यूट्रॉन का is A minus Z is the number of neutrons. उसका मास is mn. So सभी का मास कितना होगा? A minus Z into mn.
माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस को मास ऑफ द न्यूक्लियस x, कैपिटल X का मास, दे विल गिव मास ऑफ द न्यूक्लियस का x है. खत्म. दिस इज द फॉर्मूला वेट लो. दिस इज नथिंग बट मास डिफेक्ट. दिस इज द फॉर्मूला. मास z into mp plus a minus z into mn minus mx. Okay. Sometimes mass of the proton, mass of the hydrogen is same, right? Sometimes they'll give like this. Delta m is equal to z into mh. Hydrogen का mass देगा. That is nothing but proton का mass only. Plus a minus z into mn minus n. That is the mass defect का form. And this generally is in AMU में. Mass defect. We'll do the numericals based on this.